Hello dear friends, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to discuss about verb. Verb is one of the parts of speech. Verb को उर्दू में फेल भी कहा जाता है. A word which expresses an action or state is called as verb. So verb is such kind of word in a sentence which either expresses an action or it expresses a state. वर्ब या फेल ऐसे लफ्ज को कहा जाता है जो या तो अमल को जाहिर करता है या फिर किसी हालत को जाहिर करता है. तो ऐसे लफ्ज को हम फिर वर्ब या फेल कहते हैं. इन इंग्लिश वर्ब्स फॉलो द नाउन which means that verb expresses what the person, animal, place, thing or concept does. अंग्रेजी में वर्ब हमेशा ये जाहिर करता है, यही बताता है कि कोई भी नाउन क्या काम कर रहा है या उसकी हालत क्या है. इसका मतलब यह है कि नाउन से मुराद कोई शख्स, जगह, जानवर या चीज़ या फिर कोई ख्याल, वो क्या कर रहा है, उसका क्या एक्शन है, उसकी क्या हालत है. तो ऐसे लफ्ज़ को जो हालत या कोई अमल को किसी अमल को जाहिर करे तो ऐसे लफ्ज़ को उर्दू में फेल कहते हैं जबकि अंग्रेजी में वर्ब कहा जाता है. सो दिस नाउ लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ वर्ब. Ali works hard. Here work is an action. So works or work is verb over here in this sentence. Mr. John helps poor. Help is an action. So help is verb. John gave me 5 mangoes. Again, give, gave, given. These are words which describe an action. So here gave is verb. Lazy boy can't succeed. Here succeed is a verb. This was all about verb. By watching next video, you will learn about adverb. So don't miss clicking on next video.